Hello everyone, I hope that you are doing well. After a long gap, once again we are going to start with our lecture series. So I am coming with one of the different concept which is called as grammar marathon. In this grammar marathon, we are going to complete total 100 questions and we are going to cover all the parts of the grammar, and these parts will help you to solve your paper in a good way in board examination. Recently, board had declared the dates of the examination. So this is our time to prepare for that particular examination in a good way. तो इस लेक्चर सीरीज में हम टोटल 100 क्वेश्चंस टोटल कवर करने वाले हैं और उसी के साथ में मैं यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा बल्कि आपको प्रैक्टिकली वो जो एग्जांपल्स हैं वो भी सॉल्व करके यहाँ पे लूंगा. So let's see here, we are going to start with our grammar marathon. Be ready with your pen and notebook and let's start with this particular unique series which is called as grammar marathon. So सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे छोटे टॉपिक से, मतलब जो सिंपल टॉपिक्स है उनसे स्टार्ट करके जो क्रिटिकल टॉपिक्स हैं वहां तक पहुंचेंगे और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे एंड एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द एग्जांपल्स एज वेल. सो हियर लेट्स स्टार्ट विद अवर ग्रामर मैराथन and let's begin with the topic which is articles. So in this article test or in every part of this particular grammar we are going to see 4 examples. सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स देखेंगे और 4 एग्जाम्पल्स को कवर करने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करेंगे. So let's see here the first example on your screen. The example is there is ... advertisement in the newspaper. So here you have to use the articles which is appropriate. So you all know it very well. There are total 3 articles in English, a and the. Sometimes the is called as the as per the sound of the next word. So here in this particular example you have to think about a and the. Now you have to just pause this particular video for a while and you have to solve the example before I'm going to tell you the right answer. So I hope you will do that. Let's see the first answer of this particular first question here. So the example is there is ... advertisement in the newspaper. So here advertisement is a word and this particular word started with the vowel sound. So whenever vowel sound is there, that time obviously we need to use which article? I hope you had guessed the correct article here and the correct answer here is an. There is an advertisement in the newspaper. After solving this particular example, let's move forward with our second example, that is ... Amazon is ... longest river in ... world. So there are total 3 articles you have to put it here. Now आपको यहाँ पे 3 articles put करने हैं जो कि exactly correct हो. So I know it very well that here you have to think about the definite articles rule. Because here it's very important, हम यहाँ पे तीनों भी articles एक साथ डिस्कस कर रहे हैं तो हर बार आपको जो exactly rule है वो पता होना ही चाहिए. It means you should have 100% guarantee that whatever the answer you are putting there, that this particular answer is exactly correct. So let's see here. Here Amazon. Amazon is a name of river and whenever name of the river is there, we need to put which article? I hope you had guessed the correct article here. That is the Amazon. Is ... longest. Longest, definitely this is particular word which is in superlative degree. Long, longer and longest. So whenever superlative word is there, before that we need to put which article? Once again here you have to put the article. And the last one, world. So this is one of the word or this is one of the particular thing which is unique of their kind. So whenever the particular thing is unique of their kind, we need to put the article. तो तीनों भी जगह पे यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा. The Amazon is the longest river in the world. And here यहाँ पे मैंने the का pronunciation जो है वो दी किया हुआ है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे Amazon is actually started with the vowel sound. So that's why I have to say the Amazon. I hope you understood it. Now let's ready to solve the next example here. The third example here we are going to solve, that is Raju has ... envelope in which he had kept keys. So here in this particular example, you have to think about the particular word which is envelope. Envelope started with a sound. A sound is a vowel sound.
and whenever vowel sound is there, we have to put an article. So here your correct answer will be Raju has an envelope in which he had kept keys. I hope you had solved it correctly. Now be ready to solve the next example of this particular type of the grammar, that is articles. So let's see here. Raghu is ... brave person who saved girl's life. So here in this particular example, our word is brave. Before that, we need to put the correct article. So it means now you have to think about the particular sound, that is brave. So this particular word started with b sound, that is brave. So here you have to put which article? Just think about it. I hope you had guessed the correct answer here. Here you have to put a, because a, whenever we are putting a, that time the next word will be started with what? That word will be started with consonant sound. So here is very clear that the correct answer here will be Raghu is a brave person who saved girl's life. So I hope that चारों के चारों आंसर्स आपके सही आए होंगे. अगर नहीं आ रहे, so you have to see my video which is based on articles here. After watching that particular video, definitely remember you will get the idea that where exactly you have to put the correct article, right? So definitely आपका जो confusion है articles में वो definitely दूर होगा और सारे के सारे rules एक ही lecture में आपके clear हो जाएंगे. इस lecture की जो link है मैं आपको description box में दे दूंगा. You have to go through it. Okay, go through it. Let's see. We are going to start our next concept. But before that, अगर आप channel पे नए हो, so please subscribe my channel for innovative and new way to learn English language. So I hope that you will do that. Please do subscribe my channel. So after this, we are moving ahead with our next topic, that is preposition. In English language, we are having so many different prepositions. And you all know it very well that each time according to the context, we have to think about the particular preposition. So here once again we are going to start 4 examples. So let's see here. The first example, that is he never won race. He was always ... the others. So here the example is all about the particular meaning. He never won a race. मतलब वो रेस कभी भी जीतता नहीं. He was always ... the others. वो हमेशा दूसरों के क्या होता है? Definitely अगर वो जीतता नहीं तो definitely वो पीछे होगा. So definitely here you have to use which preposition? Just guess it. I hope you have solved this particular example in a good way. Let's see the correct answer here. You have to put that behind. Because whenever you are putting behind, definitely that person is not able to win the race. Now, let's see the second example. I started this project ... 2004. तो जब भी year mention होता है तो definitely हमें कौन सा article इस्तेमाल करना पड़ता है? अगर year mention हो रहा है तो definitely वहाँ पे आएगा in, right? In ही correct ऐसा preposition है जो कि year को mention करता है. Okay? I started this project in 2004. I hope that you solved this particular example in a good way. Now, before going to start the next example, let me tell you that you have to practice a lot because prepositions are so many and definitely you have to think about each and every preposition whenever you are solving the example. Let's see. Here, now we are going to solve the next example, that is you have to complete this task ... tomorrow. So here, tomorrow is the word and definitely this is the day, right? And definitely whenever day is mentioned, which preposition you have to put here? Now pause this particular video for a while, write down the answer, and now I'm going to tell you the answer of this particular question. Be ready to check your answer. Just check your answer. Which answer you have put there? Your correct answer should be until, or maybe you can say till. And after that you can see the next example, that is he is working here ... last month. So the particular person is started working there, right? It means वो जो इंसान है last month से वहाँ पे काम कर रहा है और अभी भी वहाँ पे काम कर रहा है. तो definitely remember जब भी हमें इस तरह का example होगा जहाँ पे कोई जो activity है, जॉब या फिर जो action है वो past में start हुई है और अभी भी continuously चल रही है, तो उस वक्त हमें जो preposition इस्तेमाल करना होता है वो होता है since. So here your correct answer will be he is working here since last month. So I hope that you understood the difference in between in, maybe until or till,
or maybe since. So I hope that in your examination you will write down the correct answer whenever preposition part is there. So before wasting the time, without wasting the time, we are going to start with our next part of the grammar, that is modal auxiliaries and their functions. So you know it very well. ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, जहां पे ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन मिलता है पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन. And you know it very well what exactly you have to do. You have to pick out the particular modal auxiliary. आपको वहां पर से modal auxiliary उठानी है, नीचे लिखनी है और उसी के साथ में आपको लिखना है उसका function. I hope that you will write the correct function of each and every modal auxiliary. Now let's see the first example here. Could you please water the plants? Could you please water the plants? So here, what kind of the modal auxiliary is used, you have to think about. You have to pick out the correct modal auxiliary and you have to state its function. Now, just pause this particular video for a while, write down the modal auxiliary and write down its correct or exact function. Let's see here. I hope you will do that. Let's see the correct answer here. यहाँ पे जो modal auxiliary है वो है could, and could is always indicating different functions. It means according to the context you have to think about the function. तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, यहाँ पे कोई एक इंसान है जो दूसरे इंसान को क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट, दैट कुड यू प्लीज वाटर द प्लांट्स, राइट, तो पौधों में तुम पानी डालोगे, कुड यू प्लीज डू दैट. ओके, सो दैट इज वन ऑफ द फॉर्मल रिक्वेस्ट. सो हियर जो फंक्शन आएगा वो होगा फॉर्मल रिक्वेस्ट. I hope that you had written the correct answer here. Now after this, let's see the next example. The villagers out to complete temple's work. The villagers out to complete temple's work. In this particular statement, find out the modal auxiliary and state its function here. So let's see which modal auxiliary is there. Would you like to guess it? I hope you will do that. आपने correct answer यहाँ पे guess किया होगा. I know it. तो यहाँ पे जो modal auxiliary है वो है out to, और उसका फंक्शन हमेशा होता है moral obligation. इसका जो फंक्शन है वो होता है moral obligation. क्यों moral obligation? क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज है, राइट, डेफिनेटली यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में कहीं पे लिखा नहीं कि विलेजेस को ये जो काम है वो कंपल्सरी करना है, लेकिन ये कंपल्शन है. लेकिन किस तरह का कंपल्शन है? मॉरल कंपल्शन विल बी देयर. तो इट मींस दिस इज वन ऑफ द मॉरल ऑब्लिगेशन. तो जब भी आउट टू आएगा, always remember that out to is definitely used for the obligation and especially for the moral obligation. I hope that you have written the correct answer here. Now after this, let's start with the next one. I would be very happy if mom does not leave the job. I would be very happy if mom does not leave the job. तो यहाँ पे एक इंसान कहना चाह रहा है कि वो बहुत खुश होगा अगर उसकी माँ ने जॉब नहीं छोड़ी तो डेफिनेटली रिमेंबर यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है वो आपको ढूंढनी है और आपको उसका फंक्शन भी यहाँ पे लिखना है. सो आई होप दैट यू विल फाइंड आउट द राइट आंसर हियर. और जो करेक्ट आंसर है वो है वुड. यहाँ पे जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो है वुड, और वुड का जो फंक्शन बनता है वो हमेशा बनता है सर्टेनिटी और मे बी विलिंगनेस. तो डेफिनेटली यहाँ पे सर्टेनिटी है कि वो बहुत खुश होगा, ये सर्टन थिंग है, और डेफिनेटली जब उसकी माँ जॉब नहीं छोड़ेगी तो उसे बहुत खुशी होगी. सो दैट इज ए सर्टन थिंग which will be happened. So that is the certainty you have to write down in the answer, that is function. So यहाँ पे would और उसका function है certainty. Now let's see the next example, that is the example number 12. That is Amit might need his father's permission to go outside. Right? Amit might need his father's permission to go outside. राइट, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो मॉडल ऑक्सिलरी है आपने डेफिनेटली विद इन अ सेकंड आपने यहाँ पे ढूंढ के निकाली होगी, क्योंकि ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं डेफिनेटली हमें हमेशा हेल्प करते हैं. दिस पर्टिकुलर वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड एज सपोर्टिंग वर्ब्स, और वो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं टू गेन दी पर्टिकुलर मीनिंग, ओके, और टू स्टेट द पर्टिकुलर थिंग. लेट्स सी हियर दैट अमित माइट नीड. तो कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी है? डेफिनेटली यहाँ पे जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो है माइट, और माइट हमेशा इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी को. किसको? पॉसिबिलिटी को. मतलब अमित को डेफिनेटली उनके फादर की परमिशन लेनी होगी. दैट इज द पॉसिबिलिटी. अगर वो बाहर जाना चाहता है तो ये पॉसिबल है कि उसे क्या करना पड़ेगा? अपने फादर की परमिशन लेनी पड़ेगी. सो डेफिनेटली यहाँ पे आपका फंक्शन बनेगा पॉसिबिलिटी. तो इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में आंसर लिखना है.
2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड डेफिनेटली ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी है उनको ज्यादा से ज्यादा हम कवर करेंगे इन दिस पर्टिकुलर ग्रामर मैराथन। सो आई होप दैट आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं और इसी तरह से जुड़े रहो, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो एक भी ग्रामर का मार्क्स छूटना नहीं चाहिए। So let's see here, we are going to start with our next concept which will be active to passive। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन है, बहुत बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि एक्टिव से पैसिव बनाना है, पैसिव से एक्टिव बनाना है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आज मैं ये जो कंफ्यूजन है आपका 100% क्लियर करने वाला हूँ। So let's see here the first example, that is he will finish the work in a fortnight, right? In a fortnight, so he will finish the work in fortnight। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज जो करनी है, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ढूंढो कि कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है और कहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आपने जैसे ही ढूंढा सब्जेक्ट कहाँ पे है, वर्ब कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उनको अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द रूल्स यू हैव टू पुट इट। यहाँ पे देखो कौन सा सब्जेक्ट है। अगर मैंने आपसे पूछा विच विल बी योर सब्जेक्ट, तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा सर जी यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, will जो है यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, एंड फिनिश द वर्क, सॉरी he will finish यहाँ पे to be का फॉर्म है, उसी के साथ में finish जो है वो वर्ब का काम कर रहा है, एंड द वर्क है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इन अ फोर्टनाइट क्या है, इन अ फोर्टनाइट यहाँ पे है डेफिनेटली एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आपने लिखा उसके बाद में जो आपकी फ्रेज है उसको लिख दो। तो यहाँ पे ही विल फिनिश द वर्क, यहाँ पे जब बस काम करो और द वर्क को डेफिनेटली ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है और लिख दो द वर्क। विल आया है तो विल के साथ में भी 100% आएगा, क्योंकि एक्टिव से पैसिव करने में जब भी विल होगा तो उसके साथ में भी आएगा ही आएगा। तो डेफिनेटली द वर्क विल बी फिनिश का V3 फॉर्म क्या होगा, फिनिश्ड होगा। तो होगा द वर्क विल बी finished in a fortnight by definitely he का कन्वर्जन करना पड़ेगा him में। तो डेफिनेटली आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट हियर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और एग्जाम्पल का प्रैक्टिस भी करेंगे। डेफिनेटली यू विल गेट द फुल मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सो दिस इज माय गारंटी टू यू। सो बने रहो, लगे रहो, डेफिनेटली यू विल गेट द गुड मार्क्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज पास द सैलेड हियर। व्हाट इज इट? Pass the salad here. What kind of the statement it is? So definitely imperative type of the statement is there. जब भी imperative statement होगा तो definitely active से passive करने में आपको start करना पड़ेगा let's say, L-E-T, let, और यहाँ पे let the salad be passed here. What is it? Let the salad, यहाँ पे जो verb है आपको कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट में, उसके बाद में बी लिख देना है, और पास यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स ऑलवेज स्टार्टेड विद द वर्ब। यू नो इट वेरी वेल, राइट? सो लेट द सैलेड बी पास्ड हियर, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप दैट यू हैव सॉल्व्ड इट वेरी करेक्टली। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। आवर अटेंडेंस फॉर द डे वाज मार्क्ड बाय द मॉनिटर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गेस दैट इन व्हिच voice this particular statement is there. Maybe that is in active or maybe that is in passive. Just guess it. तो definitely statement by आया हुआ है तो definitely statement जो है वो passive में है, और इसका बनाना है आपको active। मतलब जिसको active से passive करना आता है उसको 100% passive से active करना भी आ ही जाता है। So here, let's see here, your answer will be started with the monitor, right? The monitor, what will be your answer? Let's see. The monitor marked our attendance for the day. It's very common kind of the technique. जिस तरह से एक्टिव से पैसिव करते हो उसी तरह से पैसिव से एक्टिव करो, that's it, right? So definitely कभी कभी एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली पैसिव का स्टेटमेंट दिया जाता है और बच्चों से कहा जाता है you have to convert it into active words, and that time you will be confused. बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो वर्ब का फॉर्म है डेफिनेटली वही रहेगा, मार्क्ड रहेगा, एंड डेफिनेटली आपको द मॉनिटर है पहले लिखना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज वेरी सिंपल काइंड ऑफ द थिंग। सो हियर आफ्टर दिस वी आर मूविंग अहेड विद द लास्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिव टू पैसिव, दैट इज राधा हैड डन ऑल द बार्गेनिंग।
तो अगर आपने मेरा एक्टिव टू पैसिव का वीडियो देखा है तो आपको सभी को पता है कि जब भी सेंटेंस में हैव, हैज और हैड आता है तो आपको मैंने कहा था कि आपको इस्तेमाल करना है बीन। बीन लिखना ही है, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, राइट, ऐसे आपको लिखना ही है। तो यहाँ पे राधा हैड डन कौन सा आया है, हैड आया हुआ है, तो हैड के साथ में बीन लगेगा ही लगेगा। पहले देखो कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है राधा, राइट, डन है हमारा वर्ब एंड ऑल द बार्गेनिंग दैट इज अवर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाओ, उसके बाद में टू बी का जो सही से फॉर्म लग रहा है अकॉर्डिंग टू द टेंस वो लगाओ, और उसके बाद में जो V3 फॉर्म है, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो लगाओ, और उसके बाद में बाय एज एन एजेंट यू हैव टू पुट, और उसके बाद में आएगा क्या आएगा, उसके बाद में प्रोनाउन, राइट। तो डेफिनेटली लेट्स सी ऑल द बार्गेनिंग हैड बीन, और डन पहले से V3 में तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो आंसर विल बी ऑल द बार्गेनिंग हैड बीन डन बाय हुम, बाय राधा, क्योंकि यहाँ पे नाम आया हुआ है तो डेफिनेटली नाम आएगा, नाउन आएगा तो वही नाउन आपको एज इट इज पुट करना पड़ेगा, और आपका आंसर होगा ऑल द बार्गेनिंग हैड बीन डन बाय राधा। So now, without wasting the time, let's see last 4 examples of today's session. Let's see, and we're going to cover question tag. Question tag is always such kind of the thing where we are confused. ये बहुत सिंपल सा पार्ट है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टैग में डेफिनेटली कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, not that much. Okay, so let's see the first example here. Nobody left the house. Nobody left the house. और क्वेश्चन टैग लगाने के कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जो सेंटेंस मिलेगा उसको एज इट इज लिख दो, उसके बाद में फुल स्टॉप का कॉमा में कन्वर्जन कर दो, उसके बाद में देखो सेंटेंस में टू बी का फॉर्म या फिर ऑक्सिलरी वर्ब दोनों में से कुछ आता है या नहीं। अगर वो दोनों में से कोई भी नहीं है, टू बी का फॉर्म भी नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है, तो डेफिनेटली हाउ टू थिंक अबाउट डू, डज एंड डिड एज पर द टेंस। सो सोचो, नोबडी लेफ्ट द हाउस, यहाँ पे फिर से एक बार स्टेटमेंट लिख दिया, ऐसा सोचो, उसके बाद में जो फुल स्टॉप है उसका कॉमा कर दिया, और उसके बाद में सोचना है कि टू बी का फॉर्म आया है या नहीं, एम इज और वॉज वेर शैल विल, देखो हैव हैज हैड आया है नहीं है, और उसी के साथ में देखो कि कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, कैन, कुड, शुड, वुड, देखो कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली रिमेंबर यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि टेंस जो है वो कौन सा है, मतलब स्टेटमेंट का जो टेंस है वो कौन सा टेंस है आपको सोचना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली टेंस इज व्हाट, नोबडी लेफ्ट द हाउस, नोबडी लेफ्ट द हाउस, लेफ्ट है, डेफिनेटली पास्ट फॉर्म है तो सेंटेंस भी सिंपल पास्ट में ही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिड का इस्तेमाल होगा, और डिड का इस्तेमाल होगा, और उसी के साथ में अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग लगेगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग लगेगा। तो नोबडी व्हाट काइंड ऑफ द वर्ड इट इज, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये कौन सा अफर्मेटिव वर्ड है या फिर नेगेटिव वर्ड है, डेफिनेटली आंसर आएगा ये नेगेटिव वर्ड है, तो टैग लगेगा पॉजिटिव, और नोबडी का बन जाएगा दे, राइट। कौन सा प्रोनाउन आपको इस्तेमाल करना है, दे। सो डेफिनेटली रिमेंबर यहाँ पे आएगा nobody left the house, did they? What will be the answer? Nobody left the house, did they? I hope you have written the correct answer here. Okay, now let's start this particular statement. She was miserable. She was miserable. So now remember, this time we are having to be form in the statement, that is was. was आया हुआ है, तो was आए तो डेफिनेटली was का इस्तेमाल करना है। देखो कि सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, कहीं पर भी नो, नॉट, नेवर, नन ऐसे वर्ड नहीं है, राइट। डेफिनेटली स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है तो टैग लगेगा नेगेटिव, तो was का लगेगा नॉट, वो भी एब्रिविएशन फॉर्म में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में नॉट लगाना है, तो डेफिनेटली आंसर होगा she was miserable, wasn't she? Okay, I hope you have understood this particular concept of question tag here. Okay, now let's solve the next one. It sounds good. Now you have to pause this particular video for a while and you have to write down the answer. जो भी अभी मैंने आपको बताया कि सेंटेंस एज इट इज लिख दो, फुल स्टॉप को कॉमा कर दो, सोचो कि सेंटेंस में क्या है, टू बी का फॉर्म है या फिर कोई ऑक्सिलरी वर्ब आया हुआ है। अगर वो आए हुए यू हैव टू यूज देम एज इट इज। सेंटेंस को देखो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, उस हिसाब से नॉट लगाओ या फिर मत लगाओ। ओके, सो इट साउंड्स गुड। सो डेफिनेटली सेंटेंस में कहीं पर भी टू बी का फॉर्म नहीं है, कहीं पर भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो डेफिनेटली हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा डू, डज और डिड अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो टेंस कौन सा है? अगर मैंने आपसे पूछा that what exactly the tense we are having in this statement, तो आपका आंसर आएगा सर जी यहाँ पे जो टेंस है वो है डेफिनेटली कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज दैट।
जब प्रेजेंट टेंस होगा तो देखना है कि वर्ब को यस लगा हुआ है या फिर नहीं। वर्ब को यस लगा हुआ है तो डेफिनेटली रिमेंबर हमें वहां पे डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, साउंड, और उसको लगा हुआ है यस, तो डेफिनेटली क्या आएगा, डजंट आएगा, राइट, क्योंकि सेंटेंस जो है वो क्या है, सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, टैग लगेगा नेगेटिव। इट साउंड्स गुड, doesn't it? So here in this way you have to solve the example. Now be ready and solve the last example of today's session. Let's see example number 20. I'm courageous. I'm courageous. Whenever somebody is saying this particular statement, so definitely it will state that the particular person is full of energy, full of confidence. Let's see. I'm courageous. So be courageous and solve this particular example. I'm courageous. Sentence start हुआ है I am से, तो am को not नहीं लगा सकते क्योंकि amn't ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, राइट। तो जब भी सेंटेंस में am आएगा तो उसका कन्वर्जन कर देना है are में, और देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। आई एम करेजियस, कहीं पर भी नो नॉट नेवर नहीं है, तो डेफिनेटली सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी दिस वन, आई एम करेजियस, aren't I? So I hope that in today's session you have understood something about the 4 topics. और ये जो 4 टॉपिक्स हैं इनको बाद में भी हम कवर करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व सो मेनी एग्जांपल्स, 100 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस मैराथन। तो मैराथन में बने रहो, जुड़े रहो, and I hope that you will do your best and definitely you will get the good marks in your examination. So with this particular confidence, we are going to stop here. Thank you everyone. Have a nice day. Thank you.